a thin tablecloth covering a horizontal surface and horizontal table. Okay. An uniform body of round shape lies on top of it. The tablecloth is pulled from under the body and the friction causes the body to slide and rotate. What is the body's final motion on the table? Assuming that the table is so large that the body does not fall off it. Okay. Body will finally roll towards left. I mean, it's definitely going to be towards left. वो तो ठीक है. Body will finally roll towards right. I mean, body roll कर रही है anti-clockwise because friction की वजह से, yeah. And it's moving. इसका center of mass is actually going towards left. Any of all. Wait, what is the body's final motion on the table? Oh, wait. और जो table है वो smooth है कि क्या है? Uniform body of round shape, right? Tablecloth pull किया and friction causes the body to slide and rotate. Okay, slide and rotate. What does that mean? Okay, yeah, मतलब वो ऐसे हो रहा है. Fine. Not roll. Wait, something's weird. ठीक है. What is the body's final motion on the table? Assume that table is so that the body does not fall off it. Wait, what? ओके आई थिंक ऐसा है कि ये तुमने टेबल को खींच लिया उसके बाद में ये बॉडी राइट इस टाइप से रोटेट हो रही है. देन डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ फ्रिक्शन. सो वो हो गया. तुम फाइनली यानी कि क्या बोल रहे हो टेबल क्लॉथ खींचने के जस्ट बाद में कि एकदम यानी टेबल क्लॉथ ने खींच लिया पूरा वो फ्रिक्शन वगैरह के जैसे सेटल वापस हो गया और फिर ऐसा बोल रहे हो? कौन सा या लाइक क्या कंडीशन? आई डोंट आई जस्ट से इट मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट. सो 31st का आंसर. आई मीन रोल नहीं है यार. इट्स लाइक मूविंग ऑफ कोर्स बट वो साथ साथ में रोटेट भी अजीब तरह से हो रहा है. इट्स नॉट एग्जैक्टली रोलिंग इज इट. वो ऐसे हो रहा है एंड तो ये लेफ्ट में जा रही है. यस बट इट्स एंटी क्लॉकवाइज. तो एक्चुअल में फ्रिक्शन है वहां पे एंड फाइनल या आई गेस एकदम फाइनल की बात कर रहे हैं. फाइन देन ओके फिर अपन कर सकते हैं इसको. It will depend on the shape of the, I don't know. Inertia suppose about center of mass I है right. So पहले क्या हो रहा है? पहले तुमने टेबल क्लॉथ को पुल किया, it's friction acting on it like that. So कुछ टाइम के लिए इसको friction act किया है right. So you know इसकी जो velocity हो जाएगी that's gonna be f times t जितने के लिए act किया upon जो mass है and that's our velocity. इसको u बोल देता हूँ because initially ऐसा है right. एकदम खींचने के बाद में एकदम स्टार्ट में ऐसा होगा एंड फाइनली जो v रहेगा दैट विल बी सॉरी जो ओमेगा रहेगा. सो u इज टुवर्ड्स लेफ्ट एंड ओमेगा इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ओमेगा है कितना? सो इट्स एफ आर ओके अपॉन इनर्शिया राइट आई गेस सो एंड या दिस थिंग टाइम्स द टाइम ऑफ कोर्स. एंगुलर एक्सेलरेशन टाइम्स टाइम इज जस्ट दैट ओमेगा राइट. या सो we got these guys. और फिर उसके बाद में क्या होने वाला है? उसके बाद में वापस फ्रिक्शन एक्ट करेगा बट द थिंग इज कि अब ये ऐसा फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा. अब ये ऐसा होगा यानी कि ये जो पॉइंट है इट्स एक्चुअली गोइंग लाइक दैट टू दिस टेबल नॉट टेबल क्लॉथ. तो ये फ्रिक्शन ऐसा एक्ट करेगा सो जस्ट इसमें नेगेटिव हो जाएगा एंड देन आफ्टर सम टाइम द सेम टाइम इन फैक्ट सो कैपिटल टी बोल दो. So ये ऐसा है and this is ऐसा है. So minus f t upon m and then minus f r t upon s को f dash बोल देते हैं whatever. t upon I जिसको t dash बोल दो whatever. The thing is कि in the end yeah same proportion है तो cancel होके पूरा का पूरा कट जाएगा. It's going to be 0. So body will finally come to a rest right because initially क्या था it's pure rolling and finally after all of this it's still pure rolling. So that will happen certainly. So C is the answer I guess. Next question. 32nd. A small sphere d of mass m and radius r rolls without slipping inside a large fixed hemispherical radius r much bigger than small r. Okay. Small sphere of mass m radius r. Okay. If the sphere starts from rest at the top point of the hemisphere, normal force exerted by the small sphere on the hemisphere. What? When it is at the bottom position. Okay. The normal force क्या है right? Cool. We can do this I guess. So of course अपने को सिर्फ इसकी velocity देखनी है at that point.
So and it's just pure rolling or what? Rolls without slipping, right? Okay. So इसकी जो काइनेटिक एनर्जी रहने वाली है दैट्स गोना बी जस्ट और ये क्या है सॉलिड स्फीयर राइट सो 7/5 mr squared omega square right half of that actually so 7/10 whatever that will be the kinetic energy yeah और ये ऐसे से ऐसे जाने वाला है so यहाँ पे that will be omega and what not I guess that makes sense okay right और ये हो जाएगा equal to mgr of course right ये गया omega square r square which is basically like v square don't you think so so ये जो है वो v है so v square upon r that's just equal to 10g upon 7 मतलब कि ऊपर अपने को उतना फोर्स चाहिए बट नीचे g है so it should actually be 17g upon 7 right so 17 mg upon 7 that's normal force 32 का आंसर b next question friction pure rolling था ना तो no loss in kinetic energy no loss in energy 33 next okay a hollow smooth यार ये मूव क्लियर मतलब hollow smooth uniform sphere A of mass m rolls without sliding on a smooth horizontal surface okay collides head on elastically with another stationary smooth solid sphere B okay of the same mass m दोनों का mass same है ये hollow smooth sphere है और another stationary smooth solid sphere तो ये hollow है और ये solid है fine same mass m and the same radius the ratio of the kinetic energy of B to that of A just after the collision right and it's what elastically huh okay cool so no friction and yeah okay wait if there's no friction इसका मतलब है कि सिर्फ oh हाँ the ratio of kinetic energy you said और ये जो है it's what kind of surface is this smooth or what रोल्स विदाउट स्लाइडिंग सो आई गेस ये पे फ्रिक्शन है फाइन ठीक है तो जब यहाँ पे इम्पल्स बैठेगा इट्स गोना स्टार्ट रोलिंग बेसिकली एंड वी आर अज्यूमिंग कि फ्रिक्शन ने कोई काम नहीं किया है राइट बेसिकली इज दैट करेक्ट टू अज्यूम कि फ्रिक्शन ने कोई काम नहीं किया फ्रिक्शन इट कैन बी इम्पल्सिव एज वेल राइट या बट क्या ये पॉइंट मूव हो रहा है नहीं सो लेट इट बी राइट ऑफ कोर्स ये भी प्योर रोलिंग करेगा कूल okay the ratio of kinetic energy of B to that of A just for collisions so you know कि is just like 7/5 so इस वाले के लिए energy is just 7/5 m times omega square yeah basically it's 1/5 mv squared right और इस वाले के लिए it's going to be equal to so 2/3 plus 1 right that's going to be 5/3 mv square right so इसको v1 v2 बोल देते हैं these are the energies of course yeah right so initially क्या था अच्छा इसके लिए करना पड़ेगा a b initial final right let's go with velocities and what not I mean you can go with velocities of course और जो momentum रहने वाला है oh shit friction is there that won't help huh momentum conservation won't work angular momentum conservation maybe you know यहाँ पे तो contact पे same momentum same force रहेगा at least so वो momentum तुमने इसको impart किया it's like oh god this is not helping huh A के लिए क्या हो रहा होगा so you got P in that direction it's like okay P times of R upon inertia right that is the angular acceleration because of any certain angular velocity में जो increase होने वाला है वो that times of R so this thing is delta V basically right so this is delta V for any such body right I guess so yeah let's do the delta V oh god ये बहुत घटिया होने वाला है right but let's do this thing so initially क्या है what's the velocity the final velocity अपने को देखनी है we also want you know delta V and then final velocity अपन सब कुछ करने वाले हैं initial क्या है what's the initial velocity for this sphere it's v naught इसकी 0 है अपने को डेल्टा भी चाहिए in terms of momentum of course so इस वाले के लिए it's pr squared so like yeah for A basically it's a hollow sphere right hollow sphere of course right inertia भी अपन लिख ही देते ना क्या जा रहा है inertia just you know 2/3 mr squared and what not यहाँ पे क्या है 2/5 mr squared actually should be like IC लिख दो जो भी है so pr square upon IC
Not IC actually, it should be this inertia about the contact point. Yeah, that's the thing. So, okay, it's what 5/3, so 5/3 m r squared. Cancel. It's supposed to be this velocity, so that's delta v, यानी कि 3/5 p upon m. इसको अपन let's call this thing as v. So इसके लिए 3/5 v, और इसके लिए है सेम p था बट यहाँ पे चेंज हो गया, इट्स जस्ट 7/5, so it's supposed to be 5/7 v, right? It's negative force and इसके लिए positive है, right? And then energy must be conserved, and yeah, that's the thing. Oh god, ये तो बहुत लंबा चलने वाला है. Is this even worth doing it? I don't know. So इसका change in energy क्या है? Just 7/5 times mv squared. So m हटा दो, just v1 का square. So yeah, v0 minus 3/5 of m, वो सब का square minus v0 का square, right? That's going to be like negative 3/5 v times इसका difference now, of course. ये कितना लंबा चलने वाला है यार, तो सही नहीं है. 2v0 minus 3/5 of v. और दूसरे वाले के लिए क्या है? सो प्लस इनर्शिया वाला जो आने वाला है कंपोनेंट 5/3, then yeah, just difference basically. It's like 5/7 उसका square, right? So you got 5/7, right? 25 upon wait, that's for b, and oh shit, it's supposed to be like, क्या कर रहा हूँ मैं? It's not 7/5 for this, it's 5/3 for that, sorry, and this should be 7/5 instead. So 5/7 का square मतलब ये एक तो कट जाएगा इसमें, जिसका भी 7/5, right? 7/5 v squared, that's equal to 0. एक v हटा दो हर जगह से, what do you get? अच्छा, ये तो कट गया, बढ़िया. It just negative of this whole thing, so negative 2v0 plus 3/5 of v plus 7/5 of v is equal to 0, which means equal to 10. So 2v is equal to 2v0. V must be equal to v0. Cool. So this is yeah, okay. So minus 3/5 of v0, और ये क्या हो जाएगा? Just 2/5 of v0, and then this is just 5/7 of v0, right? Yeah. So अब अपने को क्या चाहिए? Ratio of kinetic energy of B that to A. So B के लिए है 7/5 times v squared basically, right? That's the thing. So इसके लिए आ जाएगा 5/7 actually is to A के लिए it's 5/3. Interesting, isn't it? Fine. 5/3 times ये चीज का square is supposed to be 4/25. तो ये 5 कटेगा, just this thing 15, like that, right? Yeah, that's supposed to be 75:28. Is that anywhere? No, it's not. Next question. Any तो फिर भूल जाओ उस बारे में. 33 का अजीब है, right? Next question, 34th. A plank of mass m is placed over a smooth inclined plane, and a sphere is placed over the plank. Plank of mass m is placed over a smooth inclined plane, a sphere is placed over the plank. Friction is sufficient to prevent slipping between sphere and plank. Okay, if the plank and sphere are released from rest, the frictional force on the sphere is. Plank of mass m is placed over a smooth inclined plane and a sphere is placed over the plank. Okay, friction is sufficient to prevent slipping between sphere and plank. Sphere and plank, उसके बीच में friction बहुत सारा है, ठीक है. If the plank and sphere are released from rest, frictional force on sphere is. Okay, understanding now. कुछ इसके बारे में है? स्पीयर के बारे में छोटा है, क्या है? स्पीयर बस, उसके ऊपर और कुछ भी नहीं दिया है. हाँ, बढ़िया. Okay, to prevent slipping between sphere and plank. If the plank and sphere are released from rest, the frictional force on sphere is. This is really bad. Okay, think about it. Wait a second. Wait. जरूरत क्या है फ्रिक्शन फोर्स की? I mean, ये तो स्मूथ है ना, राइट? स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन. अगर तुमने सिर्फ ग्रेविटी का तुमने सिर्फ ग्रेविटी को उसका काम करने दिया, जिसको ना स्लाइड डाउन विदाउट इट रोलिंग एट ऑल, राइट? Yeah, it's 0. Okay, D is the answer. Next question, 35th.
Moment of inertia of a solid cylinder about its axis is given by half mr squared. Moment of inertia of a solid cylinder about its axis. Solid cylinder about axis. What? Oh yeah, sorry. About ठीक है. If this cylinder rolls without slipping, the ratio of rotational kinetic energy to translation kinetic energies. So rotational के लिए क्या half mr squared omega square जो भी is like half mv square और इसका क्या हो जाएगा? Sorry, half of half, so like 1/4 mv square. इसका just half mv square है, like 1/2 is to 1, so 1 is to 2 basically, right? So इसका answer C है. Next question, 36. 36 is a force F is applied to the dumbbell for a time interval t. Okay. First as in 1 and then in 2. Okay, तो ठीक है. In which case the dumbbell acquire the greater center of mass speed. दोनों में सेम ही है यार. सेंटर ऑफ मास की स्पीड बोल रहे हो, सो सेम या फॉर टाइम इंटरवल टी. और ये फोर्स आई एम अज्यूमिंग कांस्टेंट है. देयर इज नो डिफरेंस. यस इज थिंग. आंसर डिपेंड्स ऑन द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द डंबल. आई डोंट केयर. द थिंग इज कि ये फोर्स कांस्टेंट है, सो या नेक्स्ट क्वेश्चन 37th. अनलेस ये फोर्स भी चेंज हो रहा हो, मतलब डायरेक्शन इसकी, तो फिर पता नहीं क्या हो रहा है. ओके, a hoop and a solid cylinder. I don't know यार, ये चेंज कैसे हो सकता है? Does it look like it's gonna change? Whatever. Next, a hoop and a solid cylinder have the same mass and radius. They both roll without slipping on horizontal surface. Hoop is like a ring, okay, and solid cylinder have the same mass and radius. They both roll without slipping on a horizontal surface. If their kinetic energies are equal, okay, so hoop के लिए क्या है? hoop के लिए kinetic energy कितनी होने वाली है? It's going to be like 2mv square का आधा, of course. And दूसरे की kinetic energy क्या है? So for the solid cylinder, right, it's like half, and then you got mr squared plus mr squared upon 2, I guess. It's supposed to be just 1/3. Sorry, 3 upon mr squared, 3 upon 2 mv square, I guess. Yeah. Right. इसको v1 बोल दो, इसको v2 बोल दो, right? Okay. So v1 hoop के लिए, v2 cylinder के लिए, whatever. These must be the same. That just means कि ये गया, ये गया, ये गया. It is just like 4v1 square is equal to 3v2 square. तो फिर क्या चाहिए? कौन सी बड़ी है? Okay. So right. Okay. That just means कि v2 is 2v1 upon square root 3, which is of course like हाँ ना, बड़ा है, we know that. So the cylinder has more energy in total. But translation energy क्या बोल सकते हैं? Okay, the hoop and the cylinder have the same translational speed, rotational speed. Okay, ठीक है, अपने को rotational energy ढूंढनी पड़ेगी translation. That's, oh god. तो hoop की जो speed है, sorry, energy is half mv1 square, but जो इसकी है cylinder की, it's gonna be half mv2 square, but that is इसका square, so half m, and then you got like 4/3v2 square. Wait, अपने को energy ढूंढनी है ना? हाँ, उनकी टोटल एनर्जी सेम है, ऑफ कोर्स. स्पीड अपन ने ढूंढ ली है, राइट? सो ट्रांसलेशन एनर्जी के वाइज में कौन सा बड़ा है? ओके, अपन करते हैं ना. सो रिंग एंड डिस्क, ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, टोटल एनर्जी, सो दोनों की सेम है. ट्रांसलेशनल ओके, और अपने को वेलोसिटी का भी क्या समझा है? सो वेलोसिटीज अपने को समझा है कि v2 इज एक्चुअली मोर देन v1, सो डिस्क की बड़ी है, इज ग्रेटर देन एंड दिस इज लेस देन. सो इसमें जहाँ पे ग्रेटर मैं उसको करेक्ट बस लिख रहा हूँ. देन ट्रांसलेशन एनर्जी भी इसकी बड़ी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स, व्हिच मींस क्योंकि टोटल एनर्जी सेम है, सो रोटेशनल एनर्जी रिंग की बड़ी है, राइट? ओके. The hoop has a greater translational speed than the cylinder. No. The cylinder has a greater translational speed than the hoop. Yes, B is correct. The hoop and the cylinder have the same. जो speed के बारे में बोल रहे हैं. I thought, okay. हाँ ठीक है ना, एक हो गया. That's all you need. Okay, next question. Right. Next. 38. In the pulley system shown, if the radii of the bigger and smaller pulley are 2 meter and 1 meter respectively, yeah, okay, and the acceleration of block A is 5,
in the downward direction, then the acceleration of block B is, so A का 5 है in downward direction and अपने को B का ढूंढना है, right? So इसकी angular acceleration क्या आने वाला है? Angular acceleration is just like 5/2, right? So that times 1 is acceleration of this guy. Of course, it's easy as that, just 5/2. Yeah, so D is the answer. What's the D? Yeah, of course. Acceleration of B is just this much upwards. Next question. A sphere is released on, और क्या हो सकता है? कुछ और? I don't know. Okay, a sphere is released on a smooth inclined plane from the top. Okay, when it moves down, its angular momentum is conserved about every point. It's a smooth inclined plane, right? तो फिर friction कुछ भी नहीं है, but gravity है. Gravity is there. Okay, so it's conserved about every point. No. Okay, conserved about the point of contact only. No, torque है ना वहां पे अभी भी, because इसमें gravity है. So हाँ, right. Its angular momentum is not conserved about the point of contact. Conserved about the center of sphere only. Not exactly. Conserved about any point on a line parallel to the inclined plane passing through. Of course, so D is the answer. 39 सभी D. Next question, 40. A smooth tube of certain mass is rotated in a gravity-free space and released. The two balls shown in the figure move towards ends of the tube. For the whole system, which of the following quantity is not conserved? Okay, smooth tube of certain mass rotated in gravity-free space and released. The two balls shown in the figure move towards the end of the tube. For the whole system, which of the following quantities is not conserved? About which point? Yeah, angular momentum के लिए तुम्हें एक point लगता है, right? Angular momentum. I mean, okay, let's just say about this point or something. Huh. Angular momentum conservation. Oh yeah, the thing is the right. This is moving like that. Release, right? That's the main thing. So angular momentum is conserved all of the time, of course. So A is right. So पूरे system के लिए, yeah. So A is definitely correct. Linear momentum, yes, actually. पूरे सिस्टम का yes. So ओमेगा से मतलब तूने रोटेट किया तो छोड़ दिया, right? Yeah. Okay, kinetic energy. Wait, is that correct? मतलब smooth tube you said. So friction तो इसमें हो नहीं सकता. There's only the normal force, right? Of course, I think kinetic energy is in fact conserved. So ये जो राइट एक्चुअली में क्या हो रहा है कि नॉर्मल फोर्स वर्क कर रहा है इन पे और इन पे, बट वो कैंसिल हो जाएगा, राइट? सो इट इज इन फैक्ट कंसर्न बिकॉज या एंगुलर स्पीड. ओके, एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा. नो, इट्स नॉट कंसर्न. ओके, बिकॉज ये राइट नॉर्मल फोर्सेस पे उल्टा काम कर, ऑफ कोर्स. सो इट्स गोना डिक्रीज, राइट? नेक्स्ट, या मतलब इनको वेलोसिटीज मिल जाएगी इन रेडियल डायरेक्शन. सो इट्स of course like that. Okay, a small block of mass m is rigidly attached at P to a ring of mass 3m and radius r. 41 करना है. Wait, but अभी क्या चाहिए? Not conserved. Okay, okay, sorry. Then D is the thing. 41st, a small block of mass m is rigidly attached to P to a ring of mass 3m. Okay. Block of mass attached at P to a ring of mass 3 and radius r. System is released from rest at theta equals 0 and rolls without sliding. यही figure है ना इसके लिए. This is a ring, I guess. Okay, it's of radius r, whatever. System is released from rest and at theta equal to 90 degree, fine, and rolls without sliding. The angular acceleration of the hoop just after release is, okay, तो ये ऐसा है. दिस इज अ मास m. ये जो पूरा है इसका मास 3m है, इसका रेडियस r है, whatever. We just want the angular acceleration of the hoop just after release. Cool. So right, there's going to be some force because of that. Let's just say वो force F है. So I'm guessing कि m पे F ऐसा लग रहा है and then इस पे mg वैसा लगने वाला है. तो इसका acceleration क्या हो जाएगा? g minus f upon m in this direction, right? और ये स्मूथ है कि क्या है? नहीं, स्मूथ नहीं है ना, that's the thing. Okay, and then you got f like this on this guy. इसका center of mass यहाँ पर. Okay, वो बहुत ही अच्छा है, that's the thing.
Of course, that must be the case. या फिर क्या अपन you can of course go for angular momentum conservation about this point or something. Nah, f ऐसा है, right? That's what we'll use. That's what we'll use. So f times r, okay, that's clockwise and whatnot. Upon इसका inertia about this point, right? Okay, that's problematic. अच्छा अबाउट अगर अपने को ये पॉइंट, हाँ क्योंकि ये पॉइंट कॉन्टैक्ट पॉइंट की, राइट ओके आई गेस वी कैन यूज दैट. सो ये स्टिल एफ टाइम्स आर है, राइट, बिकॉज इट्स एफ, या ओके कूल. सो एफ टाइम्स आर अपॉन, अब इधर से यहाँ पे रहेगा, दैट्स गोना बी अल्फा इन फैक्ट. सो ये पूरा एम आर स्क्वायर्ड है, लाइक ओके 3m r squared plus r squared, like 2r squared whatever. Yeah, and then this times r, that's gonna give us this acceleration. अल्फा तो हम निकाल चुके हैं बेसिकली. अल्फा इज जस्ट दिस थिंग. सो ये गया. अल्फा आर की बात करते हैं, नो. अल्फा आर इज जस्ट इक्वल टू एफ अपॉन 6m, राइट. सो ये इस एक्सेलेरेशन से जा रहा है आगे, एंड देन अकॉर्डिंग टू दिस का ऐसा है, तो फिर या राइट. ओ गॉड, ओ गॉड, इज दैट फोर्स नॉट कंप्लीटली वर्टिकल? मतलब ये जो है it's accelerating like that, right? What else? Oh no, it's also accelerating like this thing. Shit, ये बहुत complicated system हो जाएगा इस टाइप से. Is it even worth doing? I don't know. इसका acceleration is like, oh shit, not nice. कुछ तो भी और करना पड़ेगा अपने को. Think about something else. अगर इसका अपन सेंटर ऑफ मास ढूंढ ले, so ये ऐसा है, इसका अपन अगर सेंटर ऑफ मास ढूंढ लेते हैं somewhere over here, और you know okay, this is still at the contact point and whatnot. You just do omega vector cross this vector, so ये ऐसा जा रहा होगा center of mass. Maybe you can do something like that. What do you want? Just want the angular acceleration, right? So of course, like ये कितने से change हो रहा है, that's angular acceleration by the way, right? Yeah, I mean this would be better, but हर एक पॉइंट के लिए इनफैक्ट सेम ही है ना, सारा जो एंगल है इट्स गोइंग बाय द सेम. या so you just have to figure that out, and this is the instantaneous axis of rotation basically in this case, so it's still okay, right? Yeah, I gotta figure out the inertia about that point. That's supposed to be mr squared plus mr squared. Oh, इसका 3 है ना, so 6mr squared plus इसका, so that's r, ये 2r square हो जाएगा, and that's at m, so 2mr square. That's the inertia about this point. Okay, and then इसमें gravity लग रही है. What else? Right, so about this point इसका टॉर्क कितना है, इस पे ग्रेविटी ऐसे लग रही है, इस पे ग्रेविटी, इसका 0 हो गया अपने आप, इसका नहीं हुआ 0, राइट. ओके, इसका कितना होने वाला है? लाइक f इज जस्ट mg बेसिकली, mg टाइम्स अपने क्रॉस प्रोडक्ट है बाय द वे, इट्स गोना बी दिस थिंग, सो rmg, राइट. दैट्स द टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट. और ये कितना लंबा होने वाला है इस टाइप से. Is it even worth doing? I don't know. Okay, so this thing is our angular acceleration. Is it? I mean, we just did torque on this whole system about the, I guess, yeah, right? Yeah, I guess that's correct. ठीक है, just move with it. So m कट जाएंगे, it's got this thing like it's 8mr, so it's like 8r, then you got g upon 8r, maybe. Just go with b, I don't know. Next question, 42. A uniform rectangular plate of mass m which is free to rotate about the smooth vertical hinge passing through center and perpendicular to the plate. Acha, is lying on a smooth horizontal surface. Smooth horizontal surface, okay. A particle of mass m is moving speed u collides with the plate and sticks to it as shown. Okay. The angular velocity of the plate just after the collision is, so momentum conserve, angular momentum conserve करो. Initial angular momentum क्या है? It's just m u times ये distance is just a, right? Upon final inertia, अपने को चाहिए angular velocity of the plate, of course. Inertia क्या हो जाएगा? इस पूरे plate का inertia, which is, so okay, about this point, right? It's like m times of e squared upon 3. That's
अबाउट दिस एक्सिस एंड देन इसके अराउंड क्या होने वाला है, एम ए अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन 3 आई गेस, या so m times of a square upon 3 plus m times of a square upon 4 upon 3, which is upon 12, right? That's this inertia, and then plus is banega inertia, which is right. इसमें a upon 2 move हुआ है and then a move was like mr. Oh, and ये जो है इसका मास क्या है, इसका भी मास m ही है, बढ़िया. Plus m a square because of ये वाली चीज m a square, and then plus m a upon 2 square, it's m a square upon 4. That's the thing, that's angular velocity. So just got u upon, so a common ले लो, just 1/3 plus 1 upon 12 plus 1 plus 1/4, right? So 12u upon a times of 4 plus 1 plus 12 plus 3, which is 12u upon a times of क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15, 20 like that. That's 3u upon 5a, I guess, which is option D. Next question. 43. 43rd क्या है? Statement 1. The moment of inertia of any body is minimum about the axis which passes through its center of mass as compared to any other parallel axis. Yeah, that's right. The internal mass of the body can be assumed to be concentrated at the center of mass for applying Newton's law. So Newton's what? Applying Newton's force law. हाँ, ऐसा सोच सकते हैं. Yeah, okay, fine. That's right. Okay, statement 1 is true, statement 2 is true. Or explanation क्या? That's just what? Seriously? No, ये ज्योमेट्री के बारे में, ये एक्चुअल में फोर्स के बारे में. It's not correct explanation. So B is the thing, of course. Next 44. अगर ये इसका एक्सप्लेनेशन रहा, आई डोंट नो यार, ये कैसे हो सकता है, तुम कौन से टनल से जा रहे हो. 44th. Circular motion of particle with its constant speed is periodic, of course, not SHM. Okay, periodic but not same. That's the thing. Next question, 45th. उसे शैडो की ऐसे चेंज रहती है. In the figure, the block of mass m attached to the spring of stiffness K is in contact with the complete elastic wall. Okay, and compression in the spring is E. What? The spring is compressed further by E. What? EQ? इसमें तो ये दिख भी नहीं रहा है. Whatever. Okay, compression E है already, और इसको ये right, और फिर further इसको E से compress किया by displacing the block towards left, and is then released. If the collision between the block and the ball is completely elastic, then the time period of the oscillation of the block will be. So it's as if तुमने जो, हाँ ठीक है, ये उल्टा जा रहा है. So that's not correct to say. So already compression E था, अब क्या 2E है. So going from there to there, इतना time required क्या basically, right? Yeah. So अगर इसको मैं free SHM कर रहा हूँ, yeah, then like then what's the time, अच्छा कैसे behave करता है. It's just like x is equal to a sine of omega t. Omega, it's just a square root of, it's a upon m, yes, times t, right? That's the thing. So yeah, that's how it would have behaved. बट अब क्या हो रहा है. सो इनिशियली तुम कहाँ पर हो, तुम एकदम ही एक्सट्रीम पोजीशन पर हो, और ए जो है दैट इज एक्चुअली इट्स इक्वल टू 2e, या 2e लाइक दैट. तुम एकदम यहाँ पे हो, एंड देन आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू ई. सो ये जो वैल्यू है दैट मस्ट हैव बिकम 1/2, और तुम्हारी वेलोसिटी पॉजिटिव है, राइट? वियर्ड साइन ऐसा है. ओके, इसका कोसाइन वैल्यू जो रहेगी दैट्स गोइंग पॉजिटिव एंड व्हाट नॉट. अगर मैं इसको यूनिट सर्कल पे देख लूँ, सो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. साइन ओमेगा, सो इट्स लाइक से मैक्सिमम वैल्यू पर नहीं, इसे मिनिमम वैल्यू पर कंप्रेशन, राइट, like that, and velocity is positive, right? Yeah, right, velocity in this case it's going like that, which yes is a positive quantity because x जो है, no wait, velocity तो है ही नहीं इसमें, फिर that's zero, yeah, as expected because initially zero, right? इसका कोई कंपोनेंट है नहीं, right? Okay, उसके बाद में velocity will become positive, जैसे जैसे मूव करेगा, and then finally it will be like this. यहाँ पे velocity zero हो जाएगी. बट वहां तक अपन पहुंच नहीं देंगे ना, अपन जस्ट ई कंप्रेशन पे रोक देंगे. सो दैट्स
when this will happen. तो कब होता है ये at what angle? So initially phase क्या है minus pi upon 2, वहां से अपन कहाँ पे गए minus pi upon 6, right? या तो चेंज कितना हुआ pi upon 3 का one thing about it. Yeah, like 20%, of course. So pi upon 3 times pi upon 3 is like square root of k upon m times जितना भी time required था. Time required is the square root of m upon k times pi upon 3, which is C option. Next question. Oh shit, नहीं. That's going from there to there only, right? उसके बाद इसको वापस आना पड़ेगा. And for that, like once again, तुम्हें same time required है, I'm assuming. बिकॉज क्या हो रहा है कि तुम्हारी जिस वेलोसिटी अब नेगेटिव हो गई जो पहले होनी चाहिए थी उससे, तो ये ऊपर ऐसे जा रहा था लाइक एंड अब ये बस नेगेटिव हो चुका है और तुम्हारा एक्स कंपोनेंट वो स्टिल सेम है. इट्स प्रॉब्ली गोइंग लाइक दैट बिकॉज अब ये नेगेटिव हो गया, राइट? सो यू वांट टू गो फ्रॉम हियर टू हियर, सेम टाइम रिक्वायर्ड. सो यहाँ से यहाँ फिर वापस सेम टाइम रिक्वायर्ड दैट. तो 2 times ऑफ दिस थिंग 2 pi upon 3 आना चाहिए यहाँ पे. सो इट्स ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 46. 46 क्या है? A rod whose ends are A and B of length and of length 25 centimeters is hanged in vertical plane when hanged from a point A and point B. The time period calculated are 3 and 4. Given the moment of inertia of rod about the axis perpendicular to the rod is in the ratio 9:4. Fine. Find the distance of the center of mass from point A. जो अपना rod है, is it like, I guess it's a non, uniform rod or something. I don't know. Okay, when hang from point A and B, okay, the time period effect is this thing. Moment of inertia करते हैं ना, so just A B. Moment of inertia क्या है? 9:4, so 9I है, this is 4I whatever, right? Okay. और क्या है? Time periods दिए हुए, right? So time periods is 3:4 ratio, 3t 4t whatever. So angular frequency is like 4 times something and then 3 times something. You can think of it like that. चलो ढूंढते हैं how do you figure out this thing, right? Suppose हमारे पास में ये टाइप की बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास ऐसा है. ओके, दिस इज मेकिंग एंगल थीटा. इसका पूरा इनर्शिया आई है, सो mg/2 लाइक दैट. ये जो भी x वैल्यू होगी जस्ट x टाइम्स ऑफ x टाइम्स कोसाइन थीटा, आई गेस, राइट? दैट्स you want the torque, of course. So that's supposed to be like that. X times is a component which is sine theta times that, of course. So x times mg sine theta, which is approximately mg theta. That's the torque upon the inertia, right? That's our angular acceleration or deceleration, which means that angular frequency, I know ये theta से related नहीं, in fact ये अलग चीज है. This is just equal to square root of mg upon I xmg upon I. So angular frequencies इस रेशियो में, उनका स्क्वायर किस रेशियो में रहने वाला है? So it's like inversely proportional to what? It's right. Omega square. Okay, you can just say x is equal to omega square, or say proportional to omega squared times I. बाकी सब तो constant है. So mass is mass तो same है इसका. So no need to worry about that. I guess this should be the thing. So just want this thing. Omega square क्या रेशियो में होगा? It's in the ratio 16:9. And inertia अपन already निकाल चुके हैं. So ये जो x value है, that must be the ratio of, right, just multiply by that thing. 16/9 times 9/4, I guess. So you cancel हो जाएगा, just be 4:1, right? That's how x, that's the ratio 4:1. अपने को बोला क्या है? Find distance of center of mass from point A. A rod whose ends are A and B. Length अपने को दी हुई है, right? Okay. So, right, okay. From A तुम्हारे पास x है, and then from B it will just be L minus x, right? Of course. So
ए के लिए तुम्हारे पास x है, b के लिए तुम्हारे पास x अपॉन 4 डिस्टेंस, राइट? दोनों साइड से अप्रोच करो, तुम्हें सेम डिस्टेंस मिलना चाहिए, 25 एडिशन की होनी चाहिए, राइट? So that just means 5x upon 4 is equal to 25, x is equal to 4 times of 5 is equal to 20. That's the thing. Next question. D. Next, 47. Seventh is a wire frame in the shape of an equilateral triangle is hinged at one vertex so that it can swing freely in a vertical plane. Wire in the shape of an equilateral triangle, okay, is hinged at one vertex so that it can freely swing in vertical plane with the plane of the triangle always remaining vertical. The side of the frame is 1 upon square root 3 meters. तो जो side है, side length is just equal to 1 upon square root 3. Okay. The time period in seconds of small oscillation of the frame will be. So once again, same thing. You know, अगर वो theta से change हो रहा है, it's like, yeah. So x is this distance. क्या था once again? Just mg theta times x, and yeah, that's the thing. Upon the inertia about this point, that's our angular acceleration. So we just want like, yeah, time period is like 2 pi square root of uh, I upon x mg, I guess. Yep, that's the thing. So चलो अब निकालते हैं इसको, and mass is like, okay, this is the total mass, so we should actually say it's like 2 pi square root of I upon, so हर एक का जो mass है we'll just say that is 3m, so I upon 3m times x times g. Okay, let's figure out the inertia. ये दो के लिए क्या होने वाला है? Just ml squared upon 3, so ml squared upon 3 plus ml squared upon 3 is like 2 ml squared upon 3 for this guy. So अगर इससे पास हो रहा होता then the inertia would basically be ml squared upon 6, sorry, upon 12, right? Yeah. But अब ये इतना दूर है इससे, so right, that's the height. Okay, come on, keep on going. It's gonna work. It's gonna work out someday. Okay, and then plus इसका mass times ये distance. How do you figure that? ये 30 degree, right? And this is L. So this L cosine 30 degrees, which is square 3 upon 2 times L. So 3 upon 4L square is what we look for. 3 upon 4L square, right? That's the thing. So अपने को inertia मिल गया is just this guy, ml squared times 2/3 plus 1 upon 12 plus 3 upon 4. और क्या है आपको, और क्या चाहिए? We also want x value. So ये x, right? Of course. So yeah, x times of cosine of 30 degree, that's like square root 3 upon 2. Yes, yeah. That's equal to L. Isn't that correct? Upon 2, sorry. Yeah, that should be the thing. So x is really just L upon square root 3. अब देखो x भी मिल गया, just L upon square root 3, right? Okay, just plug that in this thing and hopefully we'll get the thing. 2 pi square root of I की जगह पे ये चीज पुट कर देते हैं और इसको कैलकुलेट तो मैंने किया ही नहीं. Let's calculate this first. So ये क्या हो जाएगा, इसका भी 8 plus 6, right? So 8 plus 9, sorry. So 17 upon 12, and then that plus 9, so 18 upon 12 basically, which is 3 upon 2 ml squared. So I is just 3 upon 2 ml squared, I guess. Right. Yeah, it's got to be like that. ठीक है, अपने को I मिल गया and अपने को x मिल चुका है. Just put that in this thing. So 2 pi square root of क्या आ रहा है, पहले तो I आएगा, which is just this thing, 3 upon 2 ml squared upon 3 times m. M तो m है times x. X is L upon square root 3 and then that times g. So ये कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, ऊपर स्क्वायर रूट 3 जगह स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 3 L कैंसिल होने वाला है, स्क्वायर रूट 3 L upon 2g, right? And then you got 2 pi like that. और L is just 1 upon square root 3, it's just 1 हो जाएगा, and then g is assuming it's 10 or something, yeah, right? Is that good enough? I don't know. हाँ, वेट, ये जी का अपन ने क्या किया, इस तो है ही नहीं वो. ओके, 10 अज्यूम कर लो इसको, लाइक 20 हो जाएगा ये. सो ये हो जाएगा पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 बिकॉज इसका 2 बाहर आएगा, सो दैट्स डी, आई गेस, राइट? डी इज द आंसर. ये सब हटाओ.
Next, 48. A circular disc has a tiny hole in it at a distance z from its center if okay its mass is m and radius r is bigger than z. Circle Circular disc, okay, tiny hole in it at distance z from the center. Okay. Its mass is m, radius r, fine. A horizontal shaft is passed through the hole and held fixed so that the disc can freely swing in the vertical plane. For small disturbance, the disk performs SHM whose time period is minimum for Z is equal to. Oh god. Time period is minimum for what Z? Let's do it. क्या होता है हमेशा एम जी थीटा एक्स, इस केस में जेड है वॉट एवर एक्स ले रहा उसको mg theta x upon the inertia about this point. In this case it's just mx square plus इसका जो already inertia था which was mr squared upon 3 no upon 2. Yes, right. तो ये क्या हो जाएगा? That's our angular acceleration for deceleration जो भी है. So ये क्या हो रहा है? Just xg upon x square plus r squared upon 2, right? Yeah, we just were about the square root of that thing. That's the angular frequency. And what do you want? Time period is minimum for, so अपने को इसको maximize करना है इस चीज को, right? Yeah. How do you maximize that? It's like g upon x plus r squared upon 2 times 1 upon x. Now this thing is just bigger than or equal to a certain thing. तो ये जो पूरी चीज है less than or equal to that. Yeah, okay. इससे जो मिलेगा अपन को, that's the maximum value. So g upon 2 square root of r squared upon 2 AMGM inequality. It's yeah, ये square root 2 हो जाएगा. It's gonna be this thing. So r और यहाँ पे square root 2. G upon square root of 2r. That's when this happens. Oh, अपने को z चाहिए. ये कब होता है? That will happen when these are equals. Like x is equal to r upon 2x, which will be x squared equal to r squared, which will be when x squared is equal to r squared upon 2. यानी कि x is equal to r upon square root 2. Right. So C is the answer. Next question. 49 करते हैं. A particle is subjected to two mutually perpendicular simple harmonic motions such that xy coordinates are given by this thing. 2 sin omega t, 2 sin of blah blah blah. Okay. Mutually perpendicular simple. Oh god. Okay. तो मैं अपने के coordinates दे दिए. The path of the particle will be omega t plus pi upon 4, Okay, that's interesting. हाँ, इसमें ये extra phase क्यों डाल दिया? And why only the y coordinate? This is okay. I know it's going to be a circle or something, but exactly बता नहीं पा रहा हूँ इसमें क्या करना चाहिए कि सर्कल जैसा हो जाए. So yeah, like y को थोड़ा extra कर दिया or something. Circle, ellipse, क्या हो रहा है, something like that. हाँ. Think about it. X plus I y. That's I know complex numbers. तुम लोगों बोलोगे हमें हमेशा यूज करने पड़ते हैं. Yeah, sin of omega t plus I sin of omega t plus pi upon 4. That's the thing, of course. You can change this, right? I guess. Think, man, think. Probably इसको split करना अपने लिए best option रहने वाला है, right? So splitting this just get like 1 upon square root 2 sine of omega t plus 1 upon square root 2 cosine of omega t, and then you can combine some stuff. So ये और ये combine कर लो. It's going to be 1 upon square root 2 plus 1 times sine omega t plus oh okay ये ellipse होने वाला है. I just know that, right? Of course. Oh, ये सब कुछ in fact I के अंदर आने वाला है, right? Wait, maybe not. It's a weird thing going on. Yeah, it's actually weird. It's this thing. Square वगैरह में कर सकता हूँ या kind of ellipse or what? Okay, think about it. सोचो exactly क्या करूँ मैं यहाँ पे. Name for z, okay, and path of the particle will be what kind of shape? ये मुझे डायरेक्टली मिल क्यों नहीं रहा है?
I mean, of course, मैं इसको square वगैरह कर सकता, that's one way, but I don't want it to be like that, right? I wanna see कि omega यानी जिस t change होता है वैसे से कैसे change हो रहा है, तो hmm. Wait, okay, maybe ये मुझे समझ गया, sin omega t and then you got a complex number right there. That's bad. Okay, we'll see क्या होता है. Okay, इसको z बोलो in fact instead of yeah. So 2 sin omega t ठीक है ना, 2 टाइम्स सब कुछ बाहर निकालो ना, sin omega t में क्या आता है सी, so 2 बाहर आ गया and और क्या क्या है, just 1 plus 1 plus iota upon square root 2 and this time sin omega t plus we would like perpendicular things though, not something like this, of course. I don't know, very weird looking shape. Okay, और ये क्या हो जाएगा, 2 times of I upon square root 2 and then cosine of omega t, that's how it should be. Is it like rotated or something? I don't know. Is it rotated? It looks like an, oh god, ये perpendicular नहीं है, that's the main problem, you know. It's not perpendicular. अगर ये होते then we could have done it easily, पर ऐसा नहीं है. Just go through, you know, ये सब करने से अच्छा है just do that thing, right? So x का square that's equal to 4 sine square of omega t. Y का square that's अच्छा 1 upon square root 2 बाहर आने वाला है, like just square root 2 का square is just 2. Sine plus cosine का square is just 1 minus 2 sine, sorry 1 plus 2 sine cosine, 1 plus, let's just say it's, you know, sine of 2 omega t if you ask me, right? Yeah, and yeah, like x square is just equal to ये चीज. Okay, it's not making sense. Some kind of parabola, no, it's not a parabola. वहां पे cosine आ रहा है, it's not even, god क्या है ये बहुत अजीब है. Try to do what I can कि काम भी नहीं कर रहा है. It's like x is equal to 2 times of 1 minus cosine of 2 omega t. Now what? So y square minus 2 is equal to 2 sine of 2 omega t and x square minus 2 is equal to, ठीक है, इनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, just get x square minus 2 का स्क्वायर plus y square minus 2 का स्क्वायर, that would be basically equal to 4, right? इसको अगर मैं expand करूँ, it's like x power 4 minus 4x square plus 4 and then y power 4 minus 4y square plus 4, that would be equal to 4. ये एक 4 cancel हो जाएगा. It's like y power, so x power 4 plus y power 4 minus, oh god ये कुछ ही कुछ है ना. Yeah, it's not a conic in the first place, right? Just move on, ये कुछ ही कुछ है यार, it's not worth doing, right? Yeah, right, next question. Of course it's just not worth doing, you know. कोई शिफ्ट नहीं है इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है. या इट्स जस्ट स्ट्रेट अप 4 डिग्री चला गया ना, वो कुछ ही कुछ है ये, और वो कॉन्स्टेंट्स भी उसमें, सो हाँ आई डोंट नो, ये सही नहीं लग रहा है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 50. 49 को भूल जाओ, 50 करते हैं. In the figure shown, the springs are connected to the rod at one end and at the midpoint. Rod at one end and at the midpoint. The rod is hinged at its lower end. Okay, rotational SHM of the rod, mass m, okay, length L will occur only if. Okay, that's weird. K is bigger than 0. What? Rotational SHM will occur if. So for some particular theta, let's just say ये angle theta, what's the torque basically, right? This thing is at K, अच्छा ये midpoint पे, right? Yeah, and approximately ये ऐसा normal है, you can say that, right? So इसका जो दूसरा component है, we can kind of ignore that, I guess, right? Because वो वैसे भी कुछ torque induce कर नहीं रहा है. क्या ये सही था? ऐसा बोलना सही है कि नहीं है? I guess it actually is, you know. So that torque is kind of a constant actually. हाँ, और ये torque भी एक constant ही है in fact, right? तो वो torque section में मिला के है क्या exactly? It is kx. Oh, and by the way, x is different. Ah,
it changes, the torque changes with respect to x. Okay, that makes sense. So पहले की मैं सब कुछ एंटी क्लॉकवाइज देख रहा हूँ बाय द वे. राइट, एक काम करते हैं, थीटा भी अपन एंटी क्लॉकवाइज ही लेते हैं, सो दैट वी कैन, दिस इज एंगल थीटा. सो पहले का क्या हो रहा है, टॉर्क इट्स गोइंग क्लॉकवाइज के माइनस k टाइम्स x, इसके लिए क्या हो जाएगा, इट्स l अपॉन 2. इसको r बोल दो यार, इस चीज को r बोल दो, नहीं इसको l अपॉन 2 बोलेंगे, l अपॉन 2 टाइम्स थीटा बेसिकली, राइट, दैट्स दिस एक्सिस. और इनिशियली ये क्या है, इनिशियली ये मतलब स्ट्रेच्ड है कि नहीं है, आई गेस नहीं है. ओके, देन इट्स माइनस के एल अपॉन 2 टाइम्स थीटा, दैट्स द फोर्स, एंड दिस टाइम्स एल अपॉन 2. सो एक और बात, देखिए एल अपॉन 2 का स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन 4, राइट, दैट्स बिकॉज ऑफ दैट गाय. ओके, प्लस इसमें थीटा लिख ही देता हूँ प्लस. सो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जस्ट के एल स्क्वायर थीटा आई गेस. ओके, और ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है, सो ग्रेविटी इज एक्टिंग लाइक दिस. ये है, ओके, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, सो mg sin theta, still it's mg sin theta, right? Okay, and it's going anti-clockwise, so that's okay. mg times theta, and then the distance of course, which is at l upon 2, right? You want to take the cross product, so ये चीज basically. Yeah, that's one thing. This times L upon 2, right? Okay, that is the torque. So ये upon inertia जो भी है, थीटा कॉमन निकाल लो, एक काम करो, थीटा L कॉमन निकाल लो, क्या क्या आ रहा है पे, दिस इज जस्ट 3/4 ऑफ के एल यहाँ पे आ गया. या राइट, और यहाँ पे क्या है, प्लस mg l upon 2, अच्छा l तो गया ना, mg upon 2 like that, upon inertia is just ml squared upon 3 I guess. Cool, this is what our alpha will be. Okay, something करना है, when will this show SHM, right? Wait, that torque is anti-clockwise, shit. Wait, what? वेट, ये टॉर्क हमेशा बड़ा रहेगा, राइट, बिकॉज ये एक्सटेंशन, शिट ये उल्टा जा रहा है, क्या कर रहा हूं मैं, इट्स नेगेटिव, सॉरी, negative 5 upon 4 kl, right? So it should be retarding, right? For that to happen, 5 upon 4 kl has to be bigger than mg basically, upon 2, sorry, which means k must be bigger than 2 mg upon 5l, right? And that is option C. Next question, 51. I guess nahi, ab 20 ho gaye na, so we should stop now. See you guys in the next video. Bye.